ओके, तो मैं अभी अभी बस रूम एंटर किया हूँ एंड एक्चुअली चेक इन के टाइम मेरे को ऑलमोस्ट 20-25 मिनट मेरे को नीचे बैठना पड़ा क्योंकि उनका रूम सब रेडी हो रहे थे। तो अपेरेंटली इनके पास ये बोल रहे थे रिसेप्शन में कि अराउंड 180 के रूम के आसपास है, बट सब फिल है। आई एम नॉट श्योर कि कितना सच है इसमें। तो अराउंड 20 मिनट वेट करने के बाद फिर गॉट अ चांस टू गेट इनसाइड द रूम एंड हियर्स हाउ द रूम लुक्स लाइक। So this is the entrance, and over here you have got a cupboard. Over here you have the complimentary beverages, and you've got 2 bottles of water. You have the electric kettle. You have a safe over here, and you have the mini freezer over here. You have a luggage rack over here. You have a working desk over here. And then you have the washroom over here. I've got a wash basin, a toilet, and you have the shower area over here. So all the areas are separated. The room is quite spacious. There are no furnitures in the room, which is a turn off, but the bed is big enough for one person, and you have a huge walking area over here. You have a couch, a coffee table, and I'm on the 14th floor, and let me give you a view. This is the view from my room from the 14th floor. I don't think I have stayed in a hotel on a higher floor. I think 14th is my record, and get a very good view of the Kuala Lumpur skyline. Apart from that, yep, that is all about the room. This is how it looks like. It's quite big. I paid 414 ringgits for this room for 3 nights. This is the third highest category. So they have a basic category, then they have another category, and then they have this category. This is called superior room. So this is the third category, and above this one is the suite. So the basic room start around 100 ringgit per night. This one costs me around 140 ringgits per night. So yep, that is all about it from the room tour. तो अभी तो मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए, एंड कोलालमपुर में ना ट्रैफिक इतना घटिया है ये क्या ही बताऊँ। एयरपोर्ट जाने के टाइम अगर आपको ऐसा ट्रैफिक मिल गया तो आप सिर्फ भगवान के लिए प्रे ही कर सकते हैं। आप मैप में दिखा रहा है कि थोड़ा देर बाद ट्रैफिक खुल जाएगा। अच्छा, तो वहाँ से तो ट्रैफिक ठीक है, चलिए हो गया, बच निकले हम। अभी हाईवे पे आ चुके हैं, तो इधर से तो और हाफ एन आवर दिखा रहा है, तो होपफुली और ट्रैफिक में नहीं पड़ूंगा। बस जाते जाते यही बोलूँगा कि अगर आप कोलालमपुर में ट्रैवल कर रहे हैं तो हाथ में टाइम लेके कोई भी जगह के लिए निकले। एंड एयरपोर्ट से अभी तो मेरा फ़्लाइट है जकार्ता के लिए, फिर जकार्ता लैंड होने के बाद एक नया फिर ट्रैवल सीरीज़ चालू होगा जो कि इंडोनेशिया ट्रैवल सीरीज़ होगा। तो उम्मीद है उसमें भी आप लोग देखेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ।